शो। जी हाँ, इस शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत से हेल्थ की बातें, बहुत से ऐसे बहुत सी ऐसी एडवाइस फ्रॉम आर इन हाउस हेल्थ एक्सपर्ट्स, और जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बात हम कर रहे हैं हार्ट डिजीज़ की और एसोसिएटेड डिजीज़ की, और उसमें एक है स्ट्रोक भी है जो कि बहुत बड़ी, इसके लिए भी बात हम करेंगे। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी आपका सवाल है तो आप प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और ज़रूर इनसे बात कीजिए, हमारे डॉक्टर से और डाइटिशियन से, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं केस स्टडी, जैसे हम बात कर रहे थे। तो आइए हम मिलकर देखते हैं कि और देखते हैं कौन हमें वेलकम कर रहा है अपने घर में। Hi, come in please. I'm Nagina. This is my home. This is my husband's name. Hi. And that's my daughter Anissa. My lifestyle's quite busy. I've got a young daughter, so that obviously keeps me very busy, and I also work part-time. So generally I'm on the go all the time. I've always got something to do. I don't have any time to really relax or sit down, so it's a very busy lifestyle. I think my lifestyle could be a lot healthier, and I know that I have to make some changes. It's just finding the time really to make those changes happen. That's the main thing, trying to fit it all in with the lifestyle that I need. We wake up at 7 o'clock, we come downstairs and have breakfast at 8. I'll have cereal and also a cup of tea, and on the weekends I might have some toast. We then go upstairs and get ready for the day. I get my daughter changed, and then we'll either go out for a class. She does a music class, she does a baby sign language class, she does a Gymboree class, which is a fitness activity class, and she also does a swimming class. So she has quite a busy and active lifestyle. We then come back, she has lunch at around 12 o'clock, and I normally try and cook her lunch fresh if I can. And then after her lunch, she'll have a nap. So we might go out for a walk, she might have a nap when she's in the buggy, and then when we come back, I'll eat my lunch. So I'll have a sandwich, normally either a tuna sandwich or a fish finger sandwich or a cheese sandwich, and then my daughter will wake up, we'll play for a bit. She has dinner at 5 o'clock, so I'll give her dinner, and then she goes to sleep at 7, and when she's gone to sleep at 7, that's when I then start preparing for the evening meal for when my husband comes home, and he normally comes home at around 7:30. For the evening meal, I like to have a variety in terms of over a week. So it could be a chicken and mushroom pie, it could be a curry, it could be a Thai curry, it could be pasta. So I like to have a variety. We don't have takeaways at all, really. I think in the last 7 years we've probably had it 3 or 4 times. We used to go out a lot more before we had our daughter. Now we probably go out maybe once a week, maybe once every 2 weeks, and we tend to enjoy eating either Lebanese food or sometimes Chinese. Those are really the main cuisine that we like to eat out. I do snack, I do eat fruit and nuts as a good snack, but I also have slightly naughty snacks, so cake sometimes and maybe some chocolate sometimes. I think I probably like to eat less dessert type foods. At the moment I try not to eat too many, but I still find the temptation there, particularly because there is quite a lot of it in the house. And I think if it isn't there, I won't crave for it, but if it's there, then there's the temptation which I often fall for. I would say it's my wife that does that. She does have a sweet tooth, and I know she likes her desserts and her sweet things. And I think when it's there, as I said, there is that temptation for me as well. मेरी खाने की जो बुरी आदत है वो है मीठा. I love मीठा. I can't resist मीठा. So जैसे chocolate cake हुआ या
just chocolate itself, is enough temptation. Another bad habit is I don't drink enough water. I can sometimes go a whole day without drinking a glass of water. अच्छी आदतें हैं fruit. So मैं fruit खाती हूँ, especially to encourage my daughter to eat. Me and my husband do try and spend time together. It's obviously a bit more difficult in the week because we are so busy, but on the weekends we'll try and watch maybe a DVD, or if we can get my mother or sister to babysit, then we'll try and go out to the cinema or something. I used to work full time before the birth of my daughter, but since she's been born, I've gone back to work part-time, so I do 2.5 days. But I mainly work from home, so it's very flexible around her. The things I think I would like my wife to change is that I would like her to be able to do more exercise. I don't think she does enough in her current lifestyle, and that's partly because she's very busy. She works as well as looks after our daughter full-time, so it's not easy to build in an exercise program. But apart from that, there's also the motivation, and you have to have the motivation to be able to do that, and I think that's perhaps lacking in my wife. So I would like to see a change in that if possible. I think that's something I know that is lacking, and I did used to exercise a lot more before I had my daughter because I had the time. I think perhaps I could try and give her more time in which she can then go to the gym. Perhaps try and on weekends to spend more time with my daughter so that she has the time to go to the gym or do some kind of physical exercise. My father has had a bypass operation, so he has a heart condition, and my mother suffers from high blood pressure. My uncles, my mum all suffer from diabetes, so that's an issue as well. My mother is, I think, very healthy. She had a cholesterol check done for the first time when she was in America about 3 years ago, which showed high cholesterol. Since then, her diet has improved dramatically, and her cholesterol is now within normal. My father, on the other hand, has had diabetes for the last 20 years, and that runs very much in his side of the family. I'm conscious that it runs in the family and that I am possibly prone to also getting diabetes. So I do try and keep a check on my sugar intake, particularly. I do have regular blood tests so that I can keep a track on what my blood sugar level is. And thankfully so far it's all been within normal, but I do have to maintain that and keep a close eye on it. I do worry about my health for the future. I do think I can make changes, and I do plan on making changes. It's just obviously trying to find the motivation and the time to do that. The biggest motivation to change myself would probably come from a health professional telling me that I had to make changes for the good of my health. I think that's probably the biggest motivator. तो ये देखें, ये थी नगीना और उनकी फैमिली। जी आप क्या कहते हैं? इससे पहले हम मेरे ख्याल एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रही हैं। हेलो हेलो, आई थिंक मेरे ख्याल वो चली गई हैं। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब को लेके आए हैं और जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मैं खुद कोलेस्ट्रॉल का बहुत देर से मुझे कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था जी। 20 साल पहले मुझे जब चेक करवाया, तो जब स्पोर्ट छोड़ दी मैंने, भी मेरी 61 ईयर्स ओल्ड, तो 1000 कोलेस्ट्रॉल हो गया। मैं गोश्त खाता था और ये पराठे देसी घी के। तो जब चेकअप कराया तो फिर 3 महीने के अंदर मैं इसको वापस 250 पे लेके आया कोलेस्ट्रॉल को। स्पोर्ट्स की सलाद खाया और शुगर 6.3 है अभी मेरी। लेकिन मीठे का मुझे भी वो जो बता रही थी कि मीठे का शौक है जी। अभी मैं पिछले हफ्ते 3 वीक के लिए लंदन में रहा, तो वहाँ से मैं वापसी पे 4-5 किलो मिठाई आइडियल वालों से लेके आया, शूटिंग से, जो सबसे बेहतरीन मिठाई है। तो मैं मिठाई का भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन वो ये
छूटता नहीं है, कैसे इसे छुट्टी नहीं है, मुंह को ये काफिर लगी हुई, उसको कैसे छोड़ा जाए। सही है, तो इसका तरीका बताएं ताकि इसको ऐसा ऐसा खैर बात कह दूं, ना गोश्त छूटता है और ना ये मीठा छूटता है। ओहो, अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल है बल्दीश पहले आप शुरू करें। ना गोश्त छूटता है और ना मिठाई छूटती है उनकी। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, और जैसे एडिक्शन जैसे कहते हैं हम, ये इज़ वेरी कॉमन, स्वीट टूथ बहुत लोगों को है, लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल मीठा खाना बंद कर दें, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, लेकिन यू कैन जस्ट मेक स्मॉल चेंजेस। सो अगर आपको आदत है खाने के बाद थोड़ा सा बर्फ़ी या कोई भी मीठी चीज़ खाने को, आप कोशिश कीजिए कि एक दिन एक मील ना खाएं, have it the next day. So the idea is कि small changes जो है they make a huge difference. और दूसरी बात रही कि आपकी the blood sugars at board level, and नगीना के husband ने भी कहा था that you know he stopped trying to avoid sugar. You don't have to avoid sugar. You just need to cut down. Because जो diabetes है या pre-diabetes जिसको बोलते हैं, it's very much related to your weight as well. So आपका जो shape है, आपका जो वज़न है, your waistline measurement है, that's very important, because अगर you're overweight, you're predisposed to diabetes, especially if it's already in the family. हाँ, और अब आप बताइए कि उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल उन्होंने बहुत कम कर दिया, पहले बहुत हाई था, तो ये फिर कैसे हुआ जब चमत्कार कि वो खाते भी रहे? नहीं, बड़े संगीन मसाइल हैं इनके, इनको जो है वो शौक है बहुत अच्छी फूड खाने का, तो लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन भी थे, तो स्पोर्ट्समैन को ये आइडिया होता है लाइफ में कि शायद अब खा लो फिर एक्सरसाइज करना है तो उसको बर्न कर देंगे, लेकिन एक्चुअली इन द लॉन्गर रन उनका नुकसान हो रहा होता है। तो इनको जो एडवाइस हम देंगे डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बल्दीश इनको बड़ा अच्छा गाइड कर दिया है, लेकिन हार्ट डिजीज़ से भी इनको बचना है अभी। तो जो कोलेस्ट्रॉल इनका 250 पे आ गया है, तो ये नहीं बताया इन्होंने कि सिर्फ वो डाइटरी चेंजेस से आया है कि या कोई मेडिसिन भी ली है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए इनको फिर एक आध स्टैटिन या कोई और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो मेडिसिन है वो अपने जीपी से मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए लेवल्स। ये 1000 वो मिलीग्राम्स में बात कर रहे हैं, हमारी यूके में हम यहाँ मिली मोल्स में बात करते हैं। तो अगर तो आजकल जो लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो अमेरिकन वो कहते हैं कि अब नंबर्स के पीछे आप ना भागें, अब ये देखें कि जो बेस लाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल था उससे 30% रिडक्शन जो है अगर आपने अचीव कर ली है विद मेडिसिन एंड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो यू आर सक्सेसफुल। तो ये इनको अपने जीपी से मिलके या किसी लिपिडोलॉजिस्ट से मिलके इतने हाई जो लेवल्स इनके गए, इनको मोस्ट लाइकली कहीं फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया ना हो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिन करना, क्योंकि सिर्फ डाइट से मिठाइयाँ खाने से इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ऊपर नहीं जाता है जितना ये बता रहे हैं। तो आई थिंक इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो मगर इसके अलावा इन्होंने जो है एक्सरसाइज भी जो है वो कह रहे हैं कि पहले वो करते थे, ज़ाहिर स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन अब शायद उन्होंने कम कर दिया या बिल्कुल छोड़ दिया, तो मेरा ख्याल है वो भी इनको कंटिन्यू शुरू करनी चाहिए अगर चाहते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत इससे भी फ़ायदा हो। दूसरा ये, अगर आपसे और भी कोई अगर आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी बात पूछनी हो आपने हमारे डॉक्टर से, तो प्लीज़ आप हमारे ईमेल ले लीजिए, ये आ रहा है स्क्रीन पर info@yasminqureshi.com। तो इसमें जो भी आप लेटर लिखेंगे और जो भी डिटेल आप चाहेंगे तो ये हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको देंगे। तो इसके बाद हम अगला अभी हमारा जो है सेगमेंट है उसमें भी हम बात करेंगे, यही बात कंटिन्यू कर रखेंगे। तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए, फ़ोन की जो फ़ोन लाइंस जो हैं वो आपके लिए खुली हुई हैं और ये नंबर आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारा और आपका फिर साथ होगा। सो स्टे ट्यून्ड।